Life in India's coolest village. Drass, Ladakh. What? Drass. Drass. So grass, but Drass. Okay. Okay. In Ladakh. Minus 60 degrees. Celsius, for those of you who use Fahrenheit. I stopped using Fahrenheit like 5 years ago now. It's funny because my family's always asking the temperature and I'll use Celsius. Then I was like, oh, like crap. These savages are Fahrenheit users. एक ऐसी जगह जहां इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड होती है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज में है। इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। See, the coldest I have been was in Alaska, and it was below, I'm trying to do the conversion because at that point in time, it was minus 70. And what would minus 70 be in Celsius? I've already forgotten. But yeah, it was minus 70 Fahrenheit. And that's actually incredibly freezing. But I was up in Alaska, and it was the dead of night. And, the dead of winter, I'll say. So, of course, it was going to be freezing. The pipes were bursting, that kind of stuff. That minus 56? Okay. Yeah, so this is much colder. But, yeah, it was minus 56. My wife corrected me. But it was minus 56, and oh, my gosh, that biting chill. But it was funny. It's like everything still operated fine. Everything still operated fine. I still went to work. I still did everything. It's just some people in the not well built or the really old buildings had their pipes freeze over. Those who had the more modern buildings were perfectly fine. They were safe, which my building was perfectly fine. But the building I worked at, its pipes were completely frozen. Minus 66.666. So it just goes on and on and on. All right, got it. Thank you. But yeah, I mean, that's the thing. It's just like I've lived in cold climates. I absolutely enjoy it. That you just gotta dress properly, know how to live life, know exactly what you're gonna do, plan out your days before you head out, that kind of thing. And it's funny, people who seem to live, at least in my experience, like when I was in Alaska, almost everyone was a smoker. And per capita, Alaska ate more ice cream than any other state in the U.S., which was weird. It's like the coldest climate, and it is the coldest climate in the U.S., and they ate more ice cream than anywhere else in the U.S. यहाँ बसा है इंडिया का सबसे ठंडा विलेज द्रास। पर कितना ठंडा? हम सबको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाता है। ह्यूमन ब्लड बॉडी से बाहर -3 डिग्रीज पर जम जाता है। हमारे घर के फ्रिज में फ्रीजर का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक हो सकता है। डीप फ्रीजर में टेम्परेचर -20 तक हो सकता है। तो आप यहाँ का टेम्परेचर जानना चाहेंगे? यहाँ का अभी टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस। फेस पे पूरी बर्फ जम गई है। पर ये यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 1995 में द्रास में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। और तब से ही ये इंडिया की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। पर जब इतना ठंडा होता है तो क्या होता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, वही सब जानने मैं आया हूँ इस खूबसूरत विलेज में। That's why in Alaska you can't take it. Well, the thing is, it gets dead winter. In the dead of winter, it's dark for like 23 hours and 59 minutes because the sun peaks for like a second. There are like 3 days where the sun doesn't come out at all, but the sun peaks for like 3 seconds. And then like every day it peaks like for a second longer and then a second longer. And then, so it's basically not there. But oh my gosh, this is just ridiculous. Just like we in India drink chai more than anyone in the world. Yeah. I'm pretty sure there's a state where they drink more per capita than anywhere else. That's what it is in Alaska. Alaska per capita, they eat more ice cream than anywhere else than any other state in America. And it's freezing cold there. But I do like myself some ice cream. So when I was there, of course, I was going to get myself 1, 2, 3, 5 gallons to eat a week. Yeah. And you know, it's cold. You gotta put on that winter weight. But yeah, I never picked up smoking though. I don't understand how people can, because especially in cold weather,
your lungs are like the most important thing. You can't have them not. And everyone was smoking. Everyone was smoking. It was just like that ruins your lungs in the long run. Oh, but it's warm going in. Like, what the heck? चारों तरफ आपको बर्फ देख के और ये सब देख के तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे कितना ठंडा है मेरे कपड़े देख के बट इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर बर्फ गिरती है पर वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर Coldest place, I guess, in the world जब मैं द्रास to में live आया in. था मुझे बस इतना पता था कि इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह है इतना ज़्यादा आइडिया नहीं At least in India, for sure. थोड़ा बहुत इमेजिन किया था तो मेरी Second in उस the world? इमेजिनेशन से भी What's the coldest place in the world? Yeah. No, I don't think it'd be Greenland. I don't think it'd be Greenland. Probably somewhere up in the northern areas of Alaska, which is probably not even hospitable, not really even a town in that area. Antarctica. Oh, of course, down south. Yeah, my brain wasn't even there. But there isn't really even a village in Antarctica. It's more like a base. Yeah, the coldest habitable place with a village. Because Antarctica has bases there, like military bases there. They don't really have a city there. Or, because I know it's like restricted territory. No one's really allowed to land in Antarctica. कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है एक्चुअल में इतनी सुंदर जगह है सच में मतलब चारों तरफ इतने खूबसूरत ऊंचे पाहाड़ है पूरे चारों Gujarat has highest T per capita. और बीच में एक वैली टाइप का सा एरिया जहाँ पर कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं Nice. तो जैसे कुछ एक साथ आपको 8-10 घर I'm a दिखेंगे, coffee फिर कुछ drinker. दूर पे 8-10 घर Unless I'm in दिखेंगे, India. फिर थोड़ी सी जगह पर दिखेंगे 10-12 घर फिर नदी के उस पार कुछ घर हैं और इतनी खूबसूरत होने के बाद भी अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस नहीं है बस इसलिए फेमस है कि ये कोल्डेस्ट प्लेस है बट ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है मतलब सच में ये तो मैं मान गया But Drass सिर्फ The thing is like you can build, like again, like when I was in Alaska, you can build buildings. It depends on how long they stay in like below a minus 50 degrees. It depends. It's like there is a certain limit for how long a house can be built to withstand a certain temperature. Sure, you could probably build it to last longer, but like in the Alaska, like four months is like the peak for as long as the house can remain, you know, because cold makes it tighten in how long can it remain strained like that before it needs the, like either if it's built with wood or steel or whatever, it needs to breathe after a certain point, which is why it needs to warm up, because it's just like no one can hold their hands like this for a long period of time without it causing a lot of pain and a lot of problems, because it hurts over time. It needs to breathe. It needs to open. And like buildings are the same. That's why the seasons help it. I mean, there are perfect seasons that don't really affect the buildings all that much. But yeah, it just like eventually they need to breathe. ठंडा है ये बात इसे खास नहीं बनाती बल्कि यहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ 22,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो इतनी पॉपुलेशन इस फ्रिज से भी ठंडी जगह में कैसे रहती है वो जानने के लिए मैंने कुछ दिन यहीं गुजारने का फैसला किया वो भी यहाँ की एक फैमिली के साथ Leave any frozen things out the door. इसी मड हाउस में रहते हैं क्योंकि इतनी ठंडी जगह में रहने के लिए कोई आम घर काफी नहीं है यहाँ के ये मिट्टी कंक्रीट और लकड़ी से बने मड हाउसेस बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं बल्कि इनमें ठंड तो कहाँ अंदर जाएगी खुद अंदर जाने के लिए भी कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं तो यहाँ के घरों में जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे करके ब्लैंकेट डाल के रखते हैं ताकि अगर कभी दरवाजा खुले तो सीधे हवा एकदम अंदर आके उसकी गर्मी ना खत्म कर दे घर की ये मेन गेट खोल के सीधे आप किसी कमरे में नहीं निकलते क्योंकि यहाँ पे अब जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा आएगी उसे यहाँ इसी कॉरिडोर में You have to plan out those things. You have to. उसके बाद फिर एक और दरवाजा खुलेगा और फिर किचन और कमरे वगैरह आएंगे बाकी के तो इतनी You guys better order something from India that you need before Trump raises tariffs again. What? I'm flying to India when I need to get something. What are you talking about? I'm flying there with empty suitcases. I prefer green locations. Snow is only beautiful for the first time. Once it starts melting, it's not very beautiful, LOL. Well, that's the thing is, like, in Alaska, it's a different story because it literally goes from being solid white to solid green. Because the sun comes out and the sun's just out 24/7. Not exactly, but you know what I mean. It's like half consistently sun and then half consistently dark. So you do have a good balance. And then there's like 2 seasons, which are like literally have night and day cycles, which do have the nice balance of in the fall, you get to see the snow primarily there. And then in the spring, you get to see the snow turning into rivers and then just a ton of green. And you do have night and day cycles. But like, again, like Alaska was like the best place I've been at. I
would need to probably be there a longer point in time. But I did enjoy it. I did enjoy it. It was and the thing is, I can understand why people who live in such areas like this, which probably never really thaw out, or when it does, you see nothing but rocks because there is no green. That would be kind of annoying, I would say. But if you're in a place that does actually snow for a long period of time, and then once it melts, there's green and beauty everywhere, that would be completely different because you're basically living in the best. And that's why I liked Alaska, because it melts after nothing but white for months, and you see nothing but green. अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग But then again, Alaska is incredibly huge. सिर्फ दरवाजा ही नहीं बल्कि यहाँ विंडोज का भी Yep, putting the paper on the windows. तो यहाँ से भी आ सकती है इसलिए विंटर्स में घर की सभी they're foaming it up. शीट या पन्नी लगाकर Yeah, because it's funny. Again, in Alaska, like so they have like plastic. It's almost like plastic wrap, and you put it on the window, and you get a hairdryer and heat it up. So that way it doesn't sag anymore because it's loose when you put it up, and the heat helps it tighten, and it helps keep the cold air trapped out between the window because the windows bleed cold. So it keeps the cold air there and the hot air inside. पूरी तरह सील कर दिया जाता है और कुछ विंडोज जो साउथ की तरफ है Yep, what जहाँ you से have to धूप do to आती है, survive. उन्हें रोज दोपहर में खोल दिया जाता है बल्कि इस घर के Every फ्लोर day, में gosh. कई इंसुलेशन की लेयर करी जाती है मैं यहाँ पर ये नीचे कारपेट बिछा रखा पूरा इन्होंने और उस कारपेट के नीचे भी फॉर्म है ताकि नीचे ग्राउंड से भी ठंडक ना आए क्योंकि ज़मीन पे ठंडी हो जाती है पर इतना सब करना भी यहाँ की बेरहम ठंड को रोकने के लिए कम पड़ जाता है इसलिए यहाँ हर कमरे में This is why I said having things built जो कि एक तरह का exactly हीटर for होता the है, climate. जिसमें लकड़ी और गोबर जलाकर कमरे को गर्म रखा जाता है और साथ ही साथ खाना Wood भी and cow इस dung. पर ही बन जाता है और फिर भी अगर ठंड लगे तो ये लोग पिंक चाय पीते हैं जो कि अभी बनाई जा रही है I'm not a fan. Too salty. Too salty. Well, I guess the reason why they have the salt is because, especially when cold, salt is actually good. Salt is an insulator, right? It's an insulator. So if there's like water in your body, you put salt in water, and it keeps it thawed out longer. It keeps it from freezing. It keeps it from getting to that freezing point because it helps keep the water a liquid. So I guess drinking it, that's why they put the salt in the pink tea because they need it. They can't have their innards starting to freeze. चाय को ऐसा पिंक कलर मिलता है बेकिंग सोडा डालने से इसके टेस्ट के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा पर ये हेल्दी होती है Kava? No. What, Ty? Chirf? Oh, okay. I haven't had that one, have I? I did? I thought it was the pink tea that was this. Oh, yeah. That's the. I didn't know it had a different name. I just called it the pink tea. Those are Indian Muslims for you. Watch it properly. This video is gem. It tells how common people have nothing to do with politics. Exactly. I love like how you can get something like this and it's just like so detached from the world. So detached from the world. It's more community based. Like that's the thing. That I love the concept of like that's why I try to always micro view the world as like nations are just neighbors to each other. Just like how would I feel about treating my neighbor or the cul-de-sac down the road. Things like it just helps. It absolutely just helps when you can just see something like this and be like, yes. How a small village operates should be how nations operate. The problem is like people take it to grand scales because then you start having like the millionaires in the village who look down upon everyone else. And that's basically the world powers, which India itself is soon going to become a world power at its rate. It's going to join the factions of Russia, China, America. Yeah, it's going to end up there. And then it's going to have its $1 million mansion and then basically flaunting its wealth to the other ones. Well, who knows? Maybe not. But yeah, it's just like that's when you see like the real dynamic. One Muslim guy pissed at the Hindu temple in Hyderabad, where I live, and that guy was beaten up by Hindus, and some people broke his
again, it's a disrespect. So yeah, you shatter him. Yeah, I don't know when it comes to something like that, because I personally believe if like if all religion should either be allowed criticism or none should be. That's just how it should be. That's just how it should be. A Tata satellite dish or और अब TV समय dish. है जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी जमा करने का। क्योंकि सारी पाइपलाइंस और स्ट्रीम्स का पानी जमा हुआ है, तो इन लोगों के पास पानी का सिर्फ एक जरिया बचा है, और वो है ज़मीन के अंदर से हैंडपंप के जरिए। बल्कि हैंडपंप को भी फॉर्म लगाकर जमने से बचाना पड़ता है। फिर पानी को डब्बे भर भर के अपने घर के अंदर लगे टैंक्स में जमा करते हैं। और इस हैंडपम्प से जो भी पानी निकला है ना, वो थोड़ी देर में यहाँ तक बस बहाए, और वो आगे भी देखो पूरा जम गया है। ये देखो, ये जमा हुआ है पूरा। इतनी देर में पानी भी जम गया यहाँ पे। कुछ सेकंड बस इतना सा रास्ता इसके कवर किया, यहाँ पे जम गया। और कुछ लोग यहाँ पर ही कपड़े भी धो लेते हैं। और कपड़े धोना तो ठीक है, पर सुखाने का क्या? Salt decreases the freezing point of water or ice. That's why it's used in colder regions for clearing the roads. Yes. Thank you. That's what it is. My wife would be able to tell me. She could tell me the chemical to salt as to why it reacts with water and the whatever cold is. I don't know. The master chemist is over there. So yeah, it's just one of those things. I know it serves a purpose. I just wouldn't be able to tell you the exact purpose. I just know that it has a purpose. तो अगर आप इंडिया की कोल्डेस्ट जगह में रह रहे हैं, तो आपके गीले कपड़ों में कुछ इस तरह से बर्फ जम जाएगी। जैसे हम जो कपड़े सुखाते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उसमें से पानी टपकता है, तो इन गीले कपड़ों से जो पानी की बूंदें निकली हैं, वो सारी हवा में ही जम गई हैं। अगर मैं आपको इन कपड़ों को उठा के दिखाऊँ ये कपड़े कैसे हैं, तो ये कपड़े पूरी तरह से देखो जमे हुए हैं। ये देखो, ये स्वेटर आप देख रहे हो, ये पूरा स्वेटर जमा हुआ है। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बर्फ़ पकड़ ली हो। ये पूरा स्वेटर कड़क हो चुका है। देखो, ये देखो कड़क एकदम। He's gonna shatter the clothes. अगर मैं इसको मारूं, ये देखो कड़क कपड़े। ये है द्रास की सर्दियाँ। I know that only happens in movies, but you get what I'm meaning. It freezes to the point where it's just gonna shatter. अब सोचो कितना ठंडा एरिया है ये। बर्फ से भरी ये वादियाँ खूबसूरत तो लगती हैं, पर तब तक ही जब तक इस बर्फ को घंटों लगा के साफ न करना पड़े। Daily snow clearing. घर की छत है ये। घर की छत पे इतनी बर्फ, पता ही चल रहा छत है। ऐसा लग रहा जमीन है। सबसे ज्यादा ठंड। I'm not gonna lie, I'd be lazy and I'd get a plow. It's funny because my brother lives up the mountain where I got in the accident, and he has a plow. For like the 1 week they get snow up there. For the 1 week they get snow up there, he has a plow. But I can't say much. I do the exact same thing. Winter like that is big no to live. Honestly, I'd have a house that's built perfectly for the weather. Like the insulation is built in. Of course, that's how we build here in the US. There's specific codes and you can't just build a structure without it meeting code. Like it has, I know like in Alaska, so my parents had a house built and the contractor cut a lot of corners. If that happened in Alaska with the corners that were cut, that contractor would have been sentenced for like what is it, like not murder, but it's like intent to murder, like that kind of thing. Because when it comes to like this kind of below zero temperatures, like where you sleep, where you live, you have to trust the building that you're staying warm in. You have to. You can't cut corners there. So we would have it built to code. Absolutely. I would have the place built to code. And you could trust most of what you're buying that it's built to code because the inspectors come and look at it. That's just how it works. तो सर यहाँ पर 1995-96 में उस टाइम बोलता है हमारे बाप दादे लोग बोलता है कि -50 अबव या 50 face looks like it's frostbitten. -50-60 तक गया था बोलता है सर। तब उस टाइम जो गाय का मतलब कमरा है ना सर, उसमें गायें
उसे दीवार के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। साथ चिपक कर? दीवार 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 के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। पर ऐसी ठंड के बाद भी लोगों को यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। हमें एक फख्र लगता है कि हम सेकंड कोल्डेस्ट एनिमेटेड प्लेस के लिए। हाँ वही हमें एक फख्र है। फक्र तो मुझे भी हुआ अपने यहाँ आने के डिसीजन पर, जब कुछ ही देर में ये खूबसूरत स्नोफॉल दिखी। I'll check your comment in a minute. तो अभी द्रास में बड़ी खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में डस्ट हो। I love the snow falling. I love the snow falling. Like there's the new feature on my phone, and I found it while I was in the accident to where I'm gonna have to show everyone. I'm sorry. I'm gonna have to show everyone. There's a new feature on my phone to where it. Okay, I'm gonna do this. It has. The snow's not falling. Let me see if I'll do it again. Yeah, you see the snow for a second? Yeah, it fades out. Yeah, due to the accident, I was able to find that feature. I love Snowfall. I freaking love it. It's one of those things that are just, it seems peaceful. It absolutely seems peaceful. It's like at ease. You can sit by a window and just watch the snow, curl up under a blanket with a loved one or with your animals if you're alone, and just enjoy the scenery. Of course, if you're working, rain's amazing too. Absolutely. Rain's amazing too. But if you're working, it becomes more of a pain to have to drive through that. That's why I'm like, you know what? Maybe when I become permanently unemployed and my wife is able to work from home as well, we can move and make a big decision to go to a mountainous location, because I love the mountains. I love the snow. I don't get any of that here. I have to drive up the mountain towards work to get that. Rain is best. It's getting soaked is fantastic. Well, technically you get the same when snowing, but you can easily brush it off before it seeps through your clothes. But yeah, rain, driving through the rain is one of the best. I love driving through the rain. The sound of it hitting the windshield is just so peaceful. So freaking peaceful. इतनी फाइन है यहाँ की बर्फ। Just beautiful. Of course, you can see how when the snow melts, how it literally looks like it's just a rock with a few random weeds growing around. You don't see green, like evergreen trees. You don't see actual real trees. It just looks like a lifeless rock, which is a sad part, which is why I could see people are like, no, not worth living, because if that melts, when that melts in the summer, there's nothing there. They live on a rock. तो द्रास में कुछ ऐसी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पर अभी सब कुछ वाइट हो गया पूरी तरह से। आसमान, ज़मीन और घर भी यहाँ के पूरे वाइट हो गए हैं, इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। यहाँ की स्नो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में है, तो आप जैसे हटाओगे तो देखिए ये भीगती नहीं है, ये आपका हाथ कुछ भी नहीं भीगता, ये पाउडर की तरह हट जाती है बस। क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए थोड़ी पाउडर फॉर्म की बर्फ़ है, एकदम रुई जैसी। अब यहाँ से पूरा गाँव दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे से घर पूरे जो एकदम वाइट और फ्रॉस्ट नहीं होता, जो पूरा धुआं है जो सर्दी का, उसमें लिपटे। Getting wet is a bad feeling. Yeah. That's why I prefer the snow, because you can wear a cloth jacket. In the rain, you can't. You have to wear a protected waterproof jacket. There are 50 countries for Muslims, but there are no countries for Hindus. I thought India was supposed to be primarily a Hindu nation, and Hindu majority countries are secular, and it shows Hinduism beauty. I guess. I myself am a Hindu atheist. I believe in Hindu traditions and culture, but not the gods. So you see, like the story is more like a history that's been embellished. I guess. Like again, the customs and everything have been there for a purpose, for a reason. But yeah. I could see how you believe that. I could see how you believe that. और कहीं-कहीं लाइट्स जलती हुई दिख रही है. But you can't be a Hindu atheist. You're an agnostic. You're an agnostic born in a Hindu household. That's what you'd be. Because if you're an atheist, you'd be like, they're all idiots. आपने कितनी बार भी देखी हो, पर हर बार खुशी
पहली बार जैसी ही मिलती है और इसे देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो जब यहाँ पर इतनी ठंड है तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ सो कैसे रहा हूँ। तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पर मड हाउस में, एक रूम है होम स्टे के अंदर, जिसमें यहाँ बीच में बुखारी लगी हुई है और अभी वो चल रही है। उसके बाद भी एक ब्लैंकेट ये लगाया हुआ है मैंने, एक ब्लैंकेट डबल किया हुआ है और फिर एक मोटी रजाई है यहाँ की, और फिर अगर इसके बाद भी ठंड लगती है तो ये है हीटिंग पैड। तो कुछ यहाँ ऐसे रात में जब बाहर इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो कुछ इस तरह सोया जाता है। तो चलो सो जाता हूँ, फिर सुबह बहुत ठंड में बाहर जाना है यार, सनराइज़ का शूट करना है। There's actually a concept of Hindu atheist. That sounds weird. सुबह की शुरुआत Sounds like an होती है oxymoron गाय at का that point. दूध निकालने से, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ गुजारने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ गांव में हर घर में लोग डेयरी के सामान की ज़रूरत के लिए गाय और अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। और क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ लंबी होती हैं तो हर ज़रूरत का सामान गर्मी से ही जमा करना पड़ता है, जैसे कि बुखारी जलाने के लिए गोबर और लकड़ियाँ, वो भी पूरा एक एक कमरा भर के, जिसमें एक कमरे में लकड़ियाँ और एक कमरे में गोबर जमा करना पड़ता है। That's a ये जो lot. आपकी गाय है उसी का ही गोबर है? हाँ, इसी का गोबर है और पहाड़ से भी लाता है। पहाड़ से भी लाते हैं? अच्छा, कितने महीने लग जाते हैं इतना गोबर जमा करने में? जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा, सितंबर तक। पूरी गर्मी तक मतलब जमा करते हैं। और गर्मी में उगा अनाज, जैसे कि यहाँ उगने वाला जौ या बार्ले, उसे भी एक कमरे में जमा करते हैं। इसीलिए ही यहाँ बेडरूम से ज़्यादा स्टोर रूम होते हैं। बल्कि अपने जानवरों को भी सर्दी से बचाने के लिए उन्हें भी घर के अंदर ही रखना पड़ता है। Nice animal क्या shelter. नाम रखा है कुछ इसका? इसका लुलू। लुलू। वैसे बाहर नहीं निकलते हैं। Oh, that was cute. Oh, he's doing zoomies. It's like my little one. यहाँ की एक और ख़ास चीज़ जो कि है ड्राई टॉयलेट। पाइपलाइन तो यहाँ जम जाती है और साथ ही साथ ड्रेन या नाली भी जम जाती है, तो इसलिए ये लोग ड्राई टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो बाद में खाद में भी काम आता है। जमा हुआ टॉयलेट तो इतना खूबसूरत नहीं लगता, पर एक चीज़ है जो जमी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे कि फ्रोज़न वाटरफॉल। बस फिर उसी फ्रोज़न वाटरफॉल का पता करके मैं निकल गया हूँ उसको देखने, पर उस तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। He should have gotten himself तो ये proper वाला जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं snowshoes. ये बहुत ज़्यादा सालों पुराना है और ये अभी एक तरह से अबेंडन हो चुका है। इसको कोई यूज़ नहीं करता, पर अभी मुझे इसलिए यूज़ But करना पड़ रहा he's है in a freezing क्योंकि मुझे temperature. आगे फ्रोज़न वाटरफॉल तक जाना है। इस ब्रिज की सच्चाई ये है कि अगर आप इस पे चलोगे तो इसमें बीच बीच में कहीं कहीं इतने बड़े बड़े गैप्स बने हैं जिसमें से एक आदमी आराम से निकल जाएगा और सीधे नीचे जाके गिरेगा। बट इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको वो गैप्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो गैप्स बर्फ से What do you mean dry toilet? Just imagine an American restroom. Yeah. It means they don't clean with water in that toilet. That's what it means dry. There is no flushing. They just dump it down into the pit and they wipe with the tissue paper that was there. That's it. That's it. Which is disgusting, and I don't understand how most Americans do that, where they'll take a dump and then they just grab the tissue paper and then wipe and then wipe and then wipe, when it's just like you're just spreading it. You need to actually clean it. You need to actually clean. But yeah, that would be a dry toilet. At least that's what I'm assuming, with no water. No water. ढके हुए हैं। तो जैसे कि आप ये वाला छेद देख सकते हैं, देखो मैं इसे अगर पैर से हटाकर आपको दिखाऊं तो ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। वो अभी दिख भी नहीं रहा था, कितना बड़ा गैप है बीच में। Those are massive gaps. अभी मुझे अपनी जांच की बाजी लगाकर गैस करना है कि गैप्स कहाँ पर हैं और इसे पूरा पार करना है यार। यही एक रास्ता है। तो कभी टूटा ब्रिज और कभी झाड़ियाँ पार करके अब पार करनी थी नदी। तो आप जितना भी देख रहे हैं पूरा पीछे ये नदी है जो पूरी तरह से फ्रोज़न है, और इस नदी को फॉलो करते करते आप एक फ्रोज़न वाटरफॉल की तरफ पहुंचोगे। और आप देख रहे हो कि
पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, ठोक ठोक के आके पड़ना पड़ रहा है, वरना ये देखो ऐसे मजे से स्लाइड हुआ पैर। और लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं आखिर पहुंच ही गया वाटरफॉल तक। वो रहा फ्रोजन वाटरफॉल। Lot of them. बड़ा मुश्किल था यहाँ तक आना, पर बहुत ही सुंदर है यार ये वाटरफॉल। इसे देखना इतना अनोखा था कि ऐसा लगा ये नेचर ही है जो सिर्फ जमे हुए पानी को भी इतना। Yeah, maybe you don't know what Gnostic means. Atheism is a Western concept. Yeah, atheism is a completely different thing, which basically means you look down upon any kind of faith-based practice and belief because you view them as nonsensical and not in founding of science. Like there is that's the reason why. That's the reason why. Agnostic is normally the ones that, oh, I'm okay with people having their customs. I enjoy a few of them myself, but I don't believe. That at least that's the Western way. It's like there's atheists which hate everything religion and don't celebrate the holidays or any kind of festivity because they view it as just barbaric practice. And then there's agnostics who will enjoy the customs and things like that because they enjoy them. खूबसूरत बना सकती है। Dry toilet should be a बल्कि blasphemy. इसकी बारीकियां Yeah. देखकर लगता ही Oh, it's कि ये disgusting. अपने आप बना हो, और इसकी यही बात इसे और खूबसूरत बनाती है। वाटरफॉल का बहता हुआ पानी तो जमा हुआ देख लिया, पर यहाँ की ठंड को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी भी जमा सकती है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो साइंस कहती है कि जब बॉइलिंग वाटर को -26 डिग्री सेल्सियस से ठंडे टेम्परेचर की हवा में फेंको तो पानी हवा में ही आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। और ऐसा होता है मेम्पेम्पा इफेक्ट की वजह से। और ऐसा करते हुए आप लोगों को एंटार्क्टिका या अर्थ के पोल्स वाली जगह पर देखेंगे, पर मैं आपको अपने इंडिया People में do that all the ऐसा time with करके hot दिखाता हूँ। water. पर ये जितना आसान दिखता है उतना नहीं होता, क्योंकि कभी टेम्परेचर सही नहीं होता तो कभी फेंकने का तरीका, या कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी वो रिकॉर्ड सही से नहीं होता। पर मैं कहाँ रुकने वाला था। रोज सुबह उठकर मैंने पूरी कोशिश करी और फाइनली इस बार वो परफेक्ट शॉट There. मिल ही गया। Wide जो enough. द्रास जैसी ठंडी जगह पर ही हो सकता है, इस बॉइलिंग वाटर को हवा में उछाल के। ओह वाह, बादल देख रहे हो हमारा, वाह। See, he's having fun while he's there. तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि जो बॉइलिंग वाटर है उसको हवा में उछालते ही वो पूरा फ्रीज हो जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी ठंड होने की आखिर वजह क्या है। वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि काफी सारी चीजें साथ मिलकर द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस बनाती No, हैं। no, no. जिसमें से एक I'm है going to move द्रास to a की cold एक place. खास I will location, have a proper जो कि toilet. लगभग There's no 10,500 way I'm फीट living की with a dry हाइट पर है। toilet. वो No भी way. ज़ांस्कर रेंज के इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे। It's और ये disgusting. पहाड़ साइबेरिया से आती ज्यादातर कोल्ड विंड्स को यहीं पर रोक लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मियों में Even बहुत if I ही need कम to बारिश use होती है, my stored बल्कि water, साल का ज्यादातर I am precipitation not going सर्दी में ही हो doing जाता a है, freaking dry वो भी toilet. स्नोफॉल की फॉर्म में, यहाँ के ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से। और इतनी स्नोफॉल होने से यहाँ साल के ज्यादातर टाइम जमीन बर्फ से ही ढकी रहती है, जिससे of the सूरज की year. गर्मी भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन सब वजहों की वजह से बनता है इंडिया का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। अब यहाँ इतनी ठंड होती है तो उसका कुछ असर यहाँ के बच्चों के खेल पर भी पड़ता है। जैसे हम गलियों में Ice क्रिकेट खेलते hockey. हैं, यहाँ की गलियों में बच्चे खेलते हैं आइस हॉकी। Field hockey. आइस हॉकी खेल रहे हो? खेलो खेलो। फिर बस इन बच्चों का थोड़ा साथ मैंने भी दे दिया। हम दोनों, तुम सब चलो आ जाओ। तो गली का आइस हॉकी खेलने के बाद मुझे मिला यहाँ का एक गवर्नमेंट स्कूल। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ ना खेल रुक रहा था और ना ही पढ़ाई। अभी तो स्कूल बंद है, तो यहाँ पे ट्यूशन चलता है, स्कूल जब बंद होता है तो। अच्छा अच्छा, पढ़ाई चलती रहती है मतलब। ताकि ये भूली ना। हाँ तुम इंटर में भूल जाते सारी चीज़ जो पढ़ा। अच्छा,
बच्चों को इतने लगन से पढ़ते देख ये तो साफ है कि द्रास का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। और द्रास का पास्ट इतना अच्छा नहीं था। 1999 में हुए कारगिल वॉर का द्रास की जमीन ही गवाह थी, जिसमें शहीद हुए जवानों की मेमोरी में यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिसको देखने का आज मुझे भी मौका मिला। और यहाँ पर एक हमारा जो फाइटर जेट है वो भी लगा हुआ है, जो इसमें यूज़ हुआ है कारगिल वॉर के टाइम पे, वो भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। और जितनी भी तोप और गन्स वगैरह यूज़ हुई हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई हैं इन लोगों ने। और ये एक्चुअल है, जो एक्चुअल उस मोमेंट पे यूज़ हुई हैं, ये कोई उनका रेप्लिका नहीं है। अभी तक हमारे कारगिल में कारगिल वॉर और कारगिल में I was thinking the monument would have just been that small statue, but no, it's the fact that it's like a massive gated off area with honorary placement stones for those that lost their lives there. That honestly, this would be a place to go visit just for this. Just for this. I mean, I would love to see it just for this. Yeah. Yeah, when it comes to like honoring soldiers, I enjoy traveling to those places. Like my grandfather's buried at like a military burial site. Well, my grandfather and grandmother are buried at a military burial site, and it's just going there, and you get a different feeling, because you can go to a regular cemetery and I don't feel anything there, but going to like something like this, which is dedicated to soldiers, I feel different about it. I absolutely feel different about it, because these are people who were willing to sacrifice their lives to, and in most cases, in this case, did sacrifice their lives to protect the nation. So I completely feel different when I go to like a military honorary burial site or a military site than I do a regular graveyard. I feel nothing when I go to a regular graveyard, because it's just people are buried there. People are buried there. That's basically it. But seeing something like this just is more impactful to me. भी जवान शहीद हुए हैं, because there's more meaning to it. मेमोरियल बनाए हुए हैं, लगभग 397 सोल्जर्स के मेमोरियल है यहाँ पर, और इतने ज़्यादा जवान मतलब शहीद हुए हैं सिर्फ इस ज़मीन को हासिल करने के लिए। और बेशक यहाँ पर अभी बहुत शांति फील हो रही है, बहुत पीस है, बस तिरंगों के लहराने की आवाज़ आ रही है जो यहाँ पर लगे हुए हैं चारों तरफ। पर ये पीस जो यहाँ पर महसूस हो रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही शोर भरी है, और यहाँ पर आकर वो आपको शांति के साथ साथ वो चीज़ महसूस होगी। कारगिल मेमोरियल से कुछ दूर ही है द्रास की एक और खूबसूरत जगह, मुश्को वैली। All Chinese tech is stolen from Western companies. Yes, there is a ton of proof of that. They show up. They go to sites where no cameras are allowed, and then they'll just come off a tourist bus taking pictures of everything. मुश्को वैली छुपे हुए द्रास का भी छुपा हुआ कोना था। कुछ खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत घर, और यहाँ के कुछ खूबसूरत लोग। और यहाँ मुझे बड़े हंसमुख बच्चे भी मिले। इनका फोटो लेते हुए जब इनकी फैमिली ने देखा तो उन्होंने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया, और इस ठंड में तो मैं चाय के लिए मना करने से रहा। पर इस शीना फैमिली ने सिर्फ चाय नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। चलो आप लोग भी खाइए कि क्यों खाएंगे? आप लोग, मैं ऐसा अकेले खाऊं अच्छी लगे मेरे को। जिसमें से एक था सत्तू और घी, जो यहाँ की लोकल डिश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। All Kashmiri? आपका तो सब एकदम वही होता है ना, ऑर्गेनिक नेचुरल, सब हुआ तो कुछ सही नहीं, बस और तो नहीं बस थैंक यू, बस चाय का सोच कर आया, और फिर पूरा खाना खा के मैंने इस फैमिली को अलविदा किया। My auto mod is tweaking out. Yeah, letting spam. I don't know. I don't know what's going on. सबसे ठंडे विलेज में I need to actually sit down and look at my mod. स्वभाव के थे, और द्रास की आने वाली सर्दियों में टेम्परेचर चाहे कितना ही गिरता जाए, पर यहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। आप लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं हैंडपंप से, तो ये सारे डब्बे आपके, आप भर के ले जाएंगे खुद? ये वापस घर। अच्छा। जहाँ हमने शिकायतों से अपना शहर भर दिया है, वही ये लोग सुविधाओं से खाली घरों को भी बिना किसी शिकायत के गर्म रखना जानते हैं।
Well, it's how they live their life. और इन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि जीने के लिए सिर्फ सही सुविधाएं नहीं, सही स्वभाव भी जरूरी है। बाय। और अगर हम भी सही स्वभाव से चलें। Yeah. The funny thing is like the people, if you did actually take them and their families and take them to the city, and then like within 2 generations, their kids would be as snobby as the rest of the kids. That's just sadly how it works. Occasionally you'll get one that's respectful and would do the due diligence and things like that. But in a situation where like a harsher environment, they grow up knowing that if they don't do their chores or what needs to be done, they will risk losing their lives. They will risk losing their lives. But in the big city, it's like, that's not the case. The chores, oh, you want me to sweep the floor? No, because sweeping the floor isn't going to risk their lives. But shoveling the snow to make sure they have a path to the water, that's life or death right there. That's life or death right there. Very hard to live in cold conditions. Yes, especially if you have, like you always need to do the job. Always need to do the job. Not even wooden houses for better installation. Well, the thing is, like, when it comes to wooden houses, there are certain ways of building them. So that way, because the wood, like, cold just seeps through wood. So there's a style of building houses where you have the beams, like it's a what is it? A 4 by 2s, 2x4s. Sorry, 2x4s. It's always the short 2x4s, and then you literally have 2 2x4s, and they're built off center of each other, so that way the insulation can overlap the beams. But it ends up costing like twice the amount in walls due to that fact. But it does help protect the house, because eventually there's a beam and then there's insulation on the outside of the beam, because the beam's here, and then there's another piece of insulation on the front side of it. So it helps block it in. तो मुश्किल से मुश्किल मौसम भी हंसते हंसते गुजार सकते हैं। They're not concrete, they're mud, which actually is an okay insulator, but it still seeps through. That was nice. I like that. मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को मेरी तरह वीडियोस बनाने में या YouTube फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स के आने के बाद मैंने प्लान किया है कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज को आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। Like knowledge information. Oh, he's promoting his own course. Oh my gosh. I find that funny. It's just like they always promote their own course. Course. Every time. Every freaking time they promote a course. It seems like that's the end goal for most YouTubers. They get to a point where they're comfortable, they can live a life, because he's got 1.8 million subscribers. He can live a comfortable life on YouTube. The thing is, they get to a point where it's like, you know what? I'm going to teach the next generation. Come here, pay for my course. It doesn't say pay, but it seems like that's what's going to happen. It's going to be a pay for the course to make videos. But the thing is, it's like you have to gain traction before you can really go anywhere, because you can make some of the greatest videos. And like, heck, there was that one girl who was trying to create a My Van Life video. She was murdered near the end of her trip by her boyfriend. And then she ended up her videos ended up making millions and millions of views. But that's mainly because, well, they wanted to see who is this girl that died while trying to make this video. Yeah. Yeah, he starts a course at the end. But yeah, living in cold climates, there are ways of living in cold climates and doing it in an enjoyable way and living a comfortable life, because that dry toilet, heck no. I mean, if that was the case in Alaska, my wife would definitely say no, right? Yeah. There's no way we're doing a dry toilet. Like, that was one of the rules she had when she was coming here. And I was like, don't worry. I already have one. I already have it. There's no way I'm wiping with just some tissue. There's no way. Or merchandise. Yeah, merchandise I'm okay with. I learned that from Star Wars back in the day. You merchandise the heck out of everything. And then, like, there's the affiliates where you put links down in the description so people follow the links so that they can get paid a bit. Eventually, I'll start utilizing everything. I don't know if I'd ever build a course, but I do believe, like, collaboration is something that's good.
like collaborating with people is good. But yeah, I love that. I absolutely love that. It just makes me want to move to a colder climate almost immediately. Yes, it does. I'm not in a financial place to do something like that. I'm working full time and I'm trying to do this on the side. Eventually, hopefully, I'll get to that point where I can move and have a nice little house and a decent car that can actually survive on the roads. I'm not going to get a truck. As much as a truck would be useful, I'm not going to get a truck. I'd rather just get a rack for the top of the vehicle to hold like lumber and things like that, because I like doing woodworking, than to get a flatbed truck and then always have to keep like sandbags in the back of the flatbed truck to weigh down the back. Merchandise is good to have, but those courses are useless. Yes, they are. Because everything you can learn on those courses, people have made videos on YouTube about it. You can get it for free. The problem is people like to go with the ones they know. So that person knows he's going to end up getting money for creating a course that is probably a copy and paste from someone on YouTube. Which is free somewhere else. You guys got a video? So bad. And don't forget to like and subscribe. Wait on that.